uh, as we have discussed the inverter circuit previously, now again we start with the P-Spice simulation part here. So you can see this is the circuit diagram here. So in this circuit diagram, if you see, uh, this is the NPN transistor here, and in this NPN transistor, basically the base is this, and this is the collector terminal, this is the emitter terminal. Clear? Actually, in P-Spice, we decide the nodes. Clear? So in between the nodes point, we consider the components which are exactly evolved. Clear? So and accordingly we just write the coding for that. Clear? So first of all, we should know that how this circuit will work, as I have already told you. Clear? So we have a supply voltage, that is this VDD, or you can say VCC, as VDD is used in case of, as you all know, in case of uh, field effect transistor. Clear? But you can use also VDD or VCC here. There is no problem. And VCC is used for the BJT. So, and you can see the input which we are applied on the base terminal of the NPN transistor. This is the NPN transistor. So here we are applying the input voltage, that is V in basically. And if we provide the low input signal over here, then we get the high output. That is the exact, that is the property of the inverter basically. And if we apply high input voltage, then we get the low output voltage. Clear? So this is the supply from where we get the uh, supply to the circuit. Clear? So this is exactly plus 5 volt. This is the maximum plus 5 volt DC supply, and that is applied to the collector terminal basically. Clear? That is connected over here. So this is the collector terminal, and you can get the output from here. At this point, you can see at collector voltage terminal point and resistance RC, that is the collector resistance. So collector resistance is connected in series. Clear? That is of around 1 kilo ohm value, while the base resistance that is connected across the base terminal of the BJT transistor, that is of higher value, that is 10 kilo ohm around. And why it is higher? Because we know that base current is very low as compared to emitter and collector. That's why this is very much high. Clear? So and also this is the ground or reference signal, reference node, that is this. Clear? So here voltage is 0. So the path will be from higher voltage to lower voltage. Clear? To circuit get operate. Clear? So first of all, we just see how we get. So you can see we have different nodes like node 1, node 2, node 3, node 4. Why we have taken nodes wise division? So we will see in the coding part of the P-Spice. Okay, I will just discuss that. Clear? Because we just assign each and every component, either it is resistor or DC voltage source. We check that which nodes basically consider that particular component. Clear? Uh, so basically, this is a P-Spice simulation. So circuit simulation takes place on the P-Spice. So information basically received from the P-Spice analysis gave the various critical voltage points of the BJT inverter. The set points being the output voltage, that is high, that is represented by V naught H. The input voltage low, that is represented by the VLOW. Clear?
Then the input low, that is VIL, and the input high voltage represented by VIH, the output low voltage represented by V naught L, and the voltage where the output and input are equals, that is represented by VM basically. Clear? So these parameters will be displayed over here. Clear? So now we come to the, ये आप definitions देख सकते हैं. Here V naught H is basically represent the maximum voltage that occurs on the output side. Here V naught L is the minimum voltage that occurs on the output. VIL is the voltage that occurs when the slope of the you can say just wait. I think it is clear to all. No? Okay, I'm just again sharing this file. I have some issue with this. Okay. Okay, so if you see now, so V naught is the maximum voltage that occurs on the input side. Clear? Similarly, V naught L is the minimum voltage that occurs on the output. Here, VIL is the uh, voltage that occurs when the slope of the voltage transfer curve equals -1 and BJT is on the edge of the conduction. Clear? VIH is the voltage when the slope of the VTC signal basically, that is voltage transfer curve, equals -1 and BJT is on the edge of saturation. Okay. So also PM voltage point, also the PM is the voltage point on the VTC where the input voltage is equal to the output voltage. So voltage transfer characteristic, that is VTC, is a graph between input and output voltage. Basically cut off point की बात करेंगे तो in this mode where the input voltage is smaller than the cut in voltage. Cut in voltage is your knee voltage. Clear? So अगर इनपुट वोल्टेज हमारा नी वोल्टेज से कम होगा तो दैट विल बी इन कट ऑफ मोड. ठीक है. Forward active means BJT mode where the input voltage larger than the cut in voltage and the collector voltage larger than 0.1 volt. Saturation mode में हमारा ट्रांजिस्टर होगा तो BJT में हमारा voltage input is higher than the cut in voltage and the collector voltage is equal to 0.1 volt. ये हमारे कुछ मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं. These are the modes of operation basically. Clear? Just wait. Okay, so these are the modes of operation. If you see, basically we have okay, we have a critical point and mode of operation. Then we have a VTC node, basically VTC and node, then circuit diagram. Clear? So how we can consider the cases? So if you take the cases basically, so आप देख सकते हैं V naught H is the output high voltage. So यहाँ आप देख सकते हैं जब हमारा इनपुट लो है, इस कट ऑफ मोड में है. ठीक है. कट ऑफ मोड मीन्स इनपुट इज बिलो द नी वोल्टेज. क्लियर? या जो हमारा जीरो है उससे भी कम है, या जीरो से भी अगर नीचे है तो आप देखिए जीरो है तो हमारा आउटपुट हमेशा हाई मिल रहा है. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ in this particular case, input voltage is 0. These are the configuration regarding this. Input is 0. Output voltage is maximum plus 5 volt because the DC supply is maximum plus 5 volt. So input voltage is below the cut-in voltage as I have said to you all. So BJT in cutoff mode is basically, so it is in off state, you can say. So this is the circuit again, if you see. Clear? So in this circuit, just wait. Okay.
wait. Wait. Okay. So if you see, this is the circuit basically, and now the second case is when input voltage is low, means VIL. Clear? In this case, basically you can again see the BJT in forward active mode near the edge of conduction. Clear? It means हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कैसे हमारा ये ट्रांसफर कर आगे इसका जो बिहेवियर है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है. क्लियर? फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू द सैचुरेशन लेवल तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे. इन सेकेंड मोड आप देख सकते हैं कि जब हम बीजेटी इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड में जा रहा है तो नियर द एज ऑफ कंडक्शन. व्हाट इज नियर द एज ऑफ कंडक्शन? दिस इज योर नियर द एज ऑफ कंडक्शन. क्लियर? सो so near the edge of conduction, input voltage is around 0.551 volt, while the output voltage is 4.9 volt. Clear? It means यहाँ पे आप देखेंगे this is the near the edge point जहाँ ये लाइन स्ट्रिप आ रही है. यहाँ इनपुट वोल्टेज हमारा 0.551 वोल्ट है और आउटपुट आपका 5 से थोड़ा कम हो गया है. Clear? That is 4.9 volt. It means V in just passed the edge of conduction and has entered forward active mode. तो इसमें हमारा जो कह सकते हैं ट्रांजिस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में वर्क कर रहा होगा. क्लियर? सो at the edge of conduction. The next one is the VM. VM is what? VM is the condition when both input voltage and output voltage you can say will be equal. Means BJT in forward active mode it will work. So this is the condition where both are equal. So you can see यहाँ पे हमारा कहीं पे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे. ठीक है? सो इट मीन्स V in VM is equal to means V in is equal to V out is equal to 0.757 volt across around this point. Clear? And in order to find the exact VM, smaller increments in the P-spice analysis were used. Clear? So the BJT will work in forward active mode. Clear? Now the next one is when input is high, VIH. So VIH में देख सकते हैं आप लोग the BJT is in saturation near the edge of saturation. So यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. It means जो आपका input है that is high voltage that is 0.7750 while the output will quite low that is 0.098 volt. Means the output voltage just went under 0.1 volt where it goes from forward active to saturation. अभी फॉरवर्ड एक्टिव सैचुरेशन मोड में जा रहा है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप धीरे धीरे लाइन हमारी सैचुरेट हो रही है. इस जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज आपका अब सैचुरेशन पे आ गया है, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है? फिर नेक्स्ट फेज है व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज लो. तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज आपका लो हो गया है ऑलमोस्ट और इनपुट आपका हाई जितना भी होता जाएगा उससे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आउटपुट आपका सैचुरेट हो गया है. तो मीन्स V naught S is equal to 5 volt. Output high voltage 5 volt and V out is 0.0195 volt. Means BJT stays in saturation and this is the lowest the V output will go. ठीक है? ये हमारे कुछ स्टेप बाय स्टेप हमारा कैसे ग्राफ क्या वोल्टेज ट्रांसफर कर वेरी कर रहा है. मीन्स आउटपुट वोल्टेज कैसे धीरे धीरे वेरी कर रहा है मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक सैचुरेशन लेवल तक अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज. ये हम लोगों ने देख लिया. क्लियर? अब अगर हम नॉइज मार्जिन की बात करें, नॉइज मार्जिन एक अनदर पैरामीटर होता है. नॉइज मार्जिन ऑफ ए सर्किट गिव्स द अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी जो कि हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? In the circuit that has input fluctuation. Clear? So the two noise margin defines where the logic high that is NMH noise margin high and logic low NML low occurs. So NMH high अगर आपको noise margin higher निकालना है so V naught H means output high minus input high. ये वोल्टेज का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा. यहाँ आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ. ठीक है? अगर आपको NML निकालना है मीन्स लो वोल्टेज लो नॉइज मार्जिन तो आपको क्या करना पड़ेगा VIL माइनस V नॉट एल मीन्स इनपुट लो माइनस आउटपुट लो करना पड़ेगा. क्लियर?
यहाँ देखिए कैलकुलेशन किया गया है, एनएमएस निकाला गया है सर्किट के अकॉर्डिंग। 5 वोल्ट इज द मैक्सिमम आउटपुट हाई वोल्टेज। यहाँ से देख सकते हैं इनपुट हाई आपका मैक्सिमम 0.775 तक जा सकता है, तो माइनस किया तो 4.225 आ गया। ये नॉइज मार्जिन, हाई हाई नॉइज मार्जिन हो गया। और लोअर नॉइज मार्जिन देखेंगे तो वी इनपुट लो इज 0.551 और आउटपुट लो इज 0.0195 वोल्ट। सो माइनस कर दिया तो हमको 0.5315 वोल्ट मिल गया। ठीक है, इसकी पी स्पाइस एनालिसिस अगर हम देखें, कैसे पी स्पाइस एनालिसिस को हम लोग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि we have starting from the basically what we are going to do. Basically we are design the BJT inverter circuit. So start with the BJT inverter statement there. Then we have the model, that is basically, and okay, so mainly we start with this point. So यहाँ हमारा जो है यहाँ से start होगा ये हमारा, ठीक है, जो भी कोडिंग का पार्ट है। तो पहले हम लोग देखेंगे जो VDD है, इसको हमने कहाँ अटैच किया। एक्चुअली इट ऑटोमेटिकली फ्रेम्स द सर्किट व्हेन यू डिसाइड द नोड्स पैरामीटर या कंपोनेंट्स बिटवीन द नोड्स। क्लियर। सो हमें केवल नोड्स के बीच में कंपोनेंट्स को डिसाइड करना है कि कहाँ हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, कहाँ हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कहाँ हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, कहाँ इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, कहाँ से आउटपुट मिलेगा। देन इट ऑटोमेटिकली frames दैट बीजेटी सर्किट एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक, सबसे पहले हम कंपोनेंट को देखेंगे, कौन सी कंपोनेंट किस किस नोड्स के बीच में लगेंगे। तो VDD से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज। तो VDD अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ कनेक्टेड है। सबसे पहले अगर हम देखें तो VDD हमारा 1 एंड 0 के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ देख सकते हैं आप सर्किट में, आप कोई भी एक सर्किट उठा लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। VDD जो है ये नोड 1 वोल्टेज और नोड 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो हम सीधे लिखेंगे कि 1, तुम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए VDD कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 टू 0, और इसको हम DC वोल्टेज दे रहे हैं कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज देखेंगे तो इनपुट वोल्टेज हमने कहाँ कनेक्ट किया है, 2 और 0 के बीच में। ठीक है, ये देखिए इनपुट वोल्टेज है, इसको हमने कनेक्ट किया है V2 और V0 के बीच में, नोड 2 और 0 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया। इसके बाद आता है बेस रेजिस्टेंस। बेस रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए 2310 लिखा हुआ है। ठीक है, 2310। तो बेस रेजिस्टेंस हमारा कहाँ, ये इसको कहाँ कनेक्ट किया है, 2 से 3 के बीच में कनेक्ट किया है। और कितने वैल्यू का है ये, 10 किलो ओम का। 10 मीन्स 10 किलो ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने लिख दिया है, 2 to 3 के बीच में कनेक्टेड है और 10 किलो ओम इसकी वैल्यू है। ठीक है, कलेक्टर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये किसके बीच में कनेक्टेड है, 1 to 4 के बीच में। कितनी वैल्यू का, 1 किलो ओम का। तो ये देखिए कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये 1 to 4 के बीच में कनेक्टेड है। 1 to 4 मीन्स ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। कितनी वैल्यू का है, 1 किलो ओम का। इसको हमने 1 किलो ओम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को देखेंगे। ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, बेसिक कलेक्टर बेस एमिटर वोल्ट टर्मिनल्स है उसमें। ये ट्रांजिस्टर क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ कनेक्टेड है, 1430 के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, 1340 देख सकते हैं आप, ये आपका ट्रांजिस्टर है, कहाँ कनेक्टेड है, 1, ये रहा नोड 1। इसके बाद आ जाएंगे हम 3, 1, 4, 3 एंड 0। इस तरीके से होके चलेंगे। ठीक है, 1430 के बीच में। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर आ गया। ठीक है, ये मॉडल फाइल है जो कि इनबिल्ट होती है, ये हमेशा आपको डालनी पड़ेगी। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये मॉडल फाइल्स वैल्यूज हैं। यहाँ एनपीएन हम यूज कर रहे हैं, पीएनपी होगा तो उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डॉट डीसी। चूंकि डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो डॉट डीसी एनालिसिस में डीसी लिखना पड़ेगा। इनपुट वोल्टेज हम लोग 0 से 5 वोल्ट के बीच में वेरी करा रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने 0.001 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो डॉट प्रिंट कमांड है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी नोड वोल्टेज हमारा वो V2 V1 V4 V3 टर्मिनल पे जो भी हमारा डीसी वोल्टेज, उसको हम वेरी में मेजर कर लेंगे।
ऐसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोब है, डॉट एंड है। इस तरह से हमारा जो है प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा पी स्पाइस सिमुलेशन है। ये देख सकते हैं आप, दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस। क्लियर? तो प्लॉट में आप देख सकते हैं ये मैक्स, ये इनपुट, ये आउटपुट वोल्टेज लाइन है, ये इनपुट वोल्टेज लाइन है, जिसको हम बेस लाइन भी, बेस वोल्टेज भी कह सकते हैं। और आउटपुट हमारा ये है, ठीक है, जिसको हम लोग कलेक्टर वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जब इनपुट हमारा मिनिमम है तो हमें आउटपुट मैक्सिमम मिल रहा है। धीरे 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 इसमें सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। एक्टिव रीजन भी आएगा, सैचुरेशन रीजन भी आएगा, और कट ऑफ मोड भी आएगा। ठीक है। यहाँ हमारे सैचुरेट हो गई है लाइन, देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ एक पॉइंट हमारा ऐसा भी है जहाँ पे दोनों वोल्टेज बराबर हो जा रहे हैं, इनपुट और आउटपुट, जिसको हम वीएम बोल रहे हैं। ठीक है। ये हमारा, ये लीनियर लाइन है, रिप्रेजेंट किया है जहाँ पे दोनों वैल्यूज बराबर हो रही हैं। सो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये हमारा बेसिकली बीजेटी ट्रांजिस्टर सर्किट हो गया। ठीक है। एनी डाउट टू एनी वन? सो दे मे आस्क। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, पी स्पाइस सिमुलेशन जो होता है दैट इज़ वेरी मच सिंपल। बस इसमें जो भी हम सर्किट एनालाइज करेंगे, अभी हम लोग बीजेटी की पढ़ रहे हैं, बाद में मॉसफेट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, तो उसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिमुलेशन में बेसिकली आपको पहले तो सर्किट्स को ड्रॉ करना है। ड्रॉ इन द सेंस कैसे करना है, आपको नोट्स पॉइंट की सर्किट आपके को फ्रेम्ड होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें नोट्स डिसाइड करेंगे। नोट डिसाइड करने के बाद आप नोट्स को कोडिंग फॉर्म में रखेंगे जैसे हमने बताया है। ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट किस किस नोट के बीच में वो आप मेंशन करेंगे। देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। क्लियर? सो आई थिंक किसी को कुछ पूछना हो उसमें पूछ सकते हैं। एनी डाउट टू एनी वन? किसी को बेटा कुछ पूछना है? Okay, so I'm just going to end the meeting here.